welcome if you're here once again. शुक्रिया. प्लीज लाइक बटन दबाइए. वीडियो की रीच बहुत ज्यादा बढ़ सकती है अगर आप प्यारे व्यूअर्स इस स्ट्रीम को लाइक करें. जितना भी आप लोग लाइक बटन ठोकेंगे, जितने ही लाइक्स मिलेंगे, तभी जाके कम वक्त इस YouTube एल्गोरिदम को समझ आएगा कि यार यहाँ पे कुछ तो चल रहा है मसालेदार, धमाकेदार, और फिर ऑफ कोर्स वीडियो के साथ चैनल की रीच भी बढ़ेगी. बट यू नो द ड्रिल. You've always heard me say, just hit that like button and let's get the discussion going. Because दोस्तों अभी कुछ ही मिनट में, यानी कि अब से 14 मिनट 12 बजे दोपहर को the schedule finally, the much delayed, much awaited schedule for the ICC Men's ODI World Cup starting in the first week of October will finally officially be announced. बहुत बहुत समय से अनगिनत लोग इंतजार कर रहे हैं आज के दिन का. मैं कौन हूं? मैं तो बात कर रहा हूं उन सारे लाखों फैंस का, इंडियन क्रिकेट फैंस, सारे फैंस, the 10 nations, everyone playing the World Cup, more than 10, sorry, all the World Cup playing nations के फैंस, दुनिया में NRIs, हमारे भारतीय भाई और बहनों जो अलग अलग देश में बैठे हैं. हेलो प्रोफेसर, हेलो आकाश, वेलकम टू द स्ट्रीम वंस अगेन गाइस. द पॉइंट इज दोस्तों कि लाइक आई सेड इन बिफोर वीडियोस, और मैंने आपको 1998 की वो एग्जांपल दी थी जब मैं इंग्लैंड गया था छुट्टी मनाने. और मैंने 98 में मैंने मेरे पिताजी ने और मेरी मदर ने, हमने 99 वनडे वर्ल्ड कप की टिकट्स खरीदे because the schedule was out a year before. And I mean 2011 there was a bit of a delay, but you know 2015 2019 World Cup schedule was announced 12 months 15 months in advance. और यहाँ पे 3.5 महीने से कम है वर्ल्ड कप के लिए. और आज जाके फाइनली because of the BCCI's delay in giving the ICC the schedule, बहुत लोग कहेंगे कि नहीं गलती ICC की है as the tournament organizers, but as I keep saying, the tournament organizers can only wait for the host nation, the host board, in this case, the ICC, to give the schedule. तो खैर 12 बजे खबर है सूत्रों के अनुसार, जो मेरे पत्रकार साथी हैं अभी मुंबई के लोअर परेल सेंट रीजस होटल में. हम तो यहाँ नोएडा में बैठे. मैंने कहा यार सवाल भी आ रहे, आप क्यों नहीं गए भैया? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कौन अपने पैसे खर्च करके मुंबई जाएगा यार? अभी तो मेरा शो भी है, आज दोपहर को शो है और फिर शाम को 2 शोज है. आप तो जानते हैं हर दिन 6 से 7 मैं न्यूज 9 लाइव पे आता हूँ, फिर 7 से 7:30 क्रिकेट नेक्स्ट. सो एज समवन हु इज बिजी थ्रू द डे, देयर इज नो पॉइंट गोइंग फॉर जस्ट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस. बट डेफिनेटली वर्ल्ड कप के लिए तो मैं जरूर जाऊंगा और मैं आपसे लाइव जुड़ूंगा अलग अलग स्टेडियम से. But anyways, it's a big day. Ashutosh thing, it's a big mistake if India faces England in Lucknow. They have Ali, Rashid, Livingston, Parkinson. As a local, I would rather see Australia as they have only Zampa. टेंशन मत लो यार आशुतोष भाई, मैं कब से कह चुका हूं द वनडे फॉर्मेट इज सो वीक. देयर इज नॉट इनफ क्वालिटी साइड्स. इट्स अ होम वर्ल्ड कप. इंडिया कैन प्ले whoever they are. इंडिया और वॉकिंग blindfolded into the semifinals. टेंशन मत लो यार ये सब चीज का. इंडिया और नेक्स्ट टू अनबीटेबल एट होम. सो शाहनवाज कह रहे हैं आई हैव अ डाउट जेवी टिकट्स विल बी अवेलेबल 15 डेज और इन जुलाई एंड अगस्त. टिकट्स का सब मालूम पड़ जाएगा अभी 12 बजे मुंबई के लोअर परेल से सेंट रीजस होटल से जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगा वहां से सब मालूम पड़ जाएगा. हार्दिक कह रहे हैं जय भाई वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट वर्ल्ड कप राइट नाउ. चलिए आप और बीसीसीआई मेरे ख्याल से एक ही प्लेटफॉर्म पे है. भाई मैं तो सोच रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे खुद की प्लानिंग करनी पड़ेगी. और मैं अगर यहाँ नोएडा में बैठकर सोच रहा हूँ कि यार कैसे प्लानिंग करेंगे, जो अनगिनत फैंस हैं इंडिया के बाहर, पूरे विदेश में, पूरे विश्व में. इमेजिन यू नो, बाय द वे अगर आपने नहीं पढ़ा वो आज का आर्टिकल तो ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो खोलिए. एक इंटरव्यू है 3 ट्रैवलिंग ग्लोबल क्रिकेट फैन ग्रुप्स के. The of course the Bharat Army, an Australian tour operator for cricket, as well as a member of the Barmy Army, the 3 biggest touring fan bases. और ये सब कह रहे हैं कि भाई ये क्या मजाक है, लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते हैं? हमें 7-8 महीने पहले वीजाज, होटल्स, फ्लाइट्स, ट्रेन ये बुक करने पड़ते हैं और यहाँ 3 महीने हो गए हैं वर्ल्ड कप के लिए और अब तक स्केड्यूल नहीं आया. सो प्लीज गो एंड रीड the article today. It's a lead story on ESPN Cricket Info, done by 2 of my friends and former colleagues from the days when I used to work there. It's a rather I'm not surprised to read the to hear what people have to say in the article, but a very very enlightening read because you understand कि जो मैं काफी महीनों से कह रहा हूँ कि बीसीसीआई को घंटा फर्क पड़ता है फैंस के बारे में. और यही बात इन 3 क्रिकेट टूर गाइड ऑपरेटर्स ने कहा था ESPN Cricket Info से. Ashutosh Bajpayee, are the new stadiums in Jaipur and Kolkata ready? Kolkata is on track. Jaipur ka I've not heard anything, so I don't know honestly.
But yeah, I've got the World Cup qualifying games. Absolutely, what fun yesterday. हाँ? कल भी कमेंट आया था, किसका आया था, सुबोध का आया था या हार्दिक का आया था? वन ऑफ द रेगुलर व्यूअर्स ने कल कहा था कि भाई वेस्ट इंडीज के बारे में बात करना छोड़ दो, ये टीम गई काम से। और मैंने कहा था नहीं यार, ऐसा नहीं है, गिव सम होप। और कल यार 374 बनाकर वेस्ट इंडीज की टीम नेदरलैंड से वो डिफेंड नहीं कर पाई, एंड लोगन वैन बीक took wickets, hit 28 of 14 balls, and then hit 30 runs in the super over, and then took 2 wickets. West Indies are now looking at elimination. Can you imagine, दोस्तों, एक विश्व कप, वनडे विश्व कप में हो सके वेस्ट इंडीज ना हो? I think Sri Lanka will make it, but imagine if Sri Lanka loses as well. Hope matches don't get decided by toss like UAE do. You definitely will be there, especially in November, around Diwali. I think Diwali इस साल नवंबर 12 को है, तो तकरीबन 2 हफ्ते पहले हम समझ सकते हैं कि especially in the north and the eastern venues ड्यू रहेगा. But it's okay यार, it's like I said, it's not T20 one day format में ड्यू इतना बड़ा factor नहीं है. You see it far more prominent in T20 matches. One day because of the duration and the pace and the skill required, I'm not so concerned, Nihar. But yes, you do raise a valid point. Anyways, let's see what the latest updates are from. I'm gonna check on my WhatsApp page here. हाँ, 12 बजे का टाइम है, यानी कि 8 मिनट अब से स्केड्यूल फाइनली रिलीज होगा. Once again, I mean, I don't want to sound like a stuck record, but my heart really goes out to the countless cricket fans, दोस्तों, जो हमारे इंडियन भाई बहन हैं जो बाहर रहते हैं. उनको देखिए, चलो उनको शायद वीजा की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, but they have to plan hotels, they have to plan tickets. Can you imagine when suddenly the venues are announced in a city like Lucknow? Lucknow, can Lucknow handle a sudden influx, a sudden boost of tourists coming in? I just wish कि बीसीसीआई ने सोचा होगा फैंस के बारे में, एनआरआईज के बारे में, इंडियन फैंस के बारे में, विदेशी फैंस के बारे में. खुद की होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री, बहुत बड़ी बूस्ट मिल सकता था इस वर्ल्ड कप से. बट अगेन, आई थिंक ऑफ कोर्स यू विल गेट सम पैक्ड हाउसेस इन मोस्ट वेन्यूज, क्योंकि हम सब क्रिकेट प्रेमी हैं. लेकिन दुख होता है यार उन सारे विश्व क्रिकेट फैंस के बारे में सोचकर जो बाहर रहते हैं और जिनको छुट्टी मांगनी पड़ेगी अपने बॉसेस से, जो ट्रैवलिंग, ऑल वीजा ऑल दैट स्टफ. वेरी वेरी टफ. Akash keh rahe, they didn't send Nicholas Puran. Well, no, it's very simple. Nicholas Puran was off the field for the entire second half of the match. And as for the rules, of course, if you're off for the whole innings, you cannot bat. So there's no surprise there. Nicholas Puran was, by the law, was not allowed to come out and bat. Akash, why all inauguration and finals in Ahmedabad? Yes, Soham, it is when you have the world's biggest stadium in Ahmedabad, when you've got over a lakh 12,000 capacity, when you've pumped in so much money, it's the biggest, the most expensive stadium. When it's named after the PM of the country, of course it's politics. Of course it's politics. It's nothing else. Yes, you want to showcase the biggest ground, but the ground is, after all, named after our honorable Prime Minister. So, not surprised. It is absolute politics, and you use the right word, Soham. It is unfair. बाकी खबर क्या है कि सेमीफाइनल्स मुंबई और कोलकाता में होंगे मोस्ट लाइकली. रिपोर्ट्स, आई एम रीडिंग द रिपोर्ट फ्रॉम क्रिकेट नेक्स्ट, जहां पे मैं हर मंडे टू फ्राइडे, बल्कि मंडे टू सैटरडे, हर शाम को 7 बजे जुड़ता हूं उस चैनल पर. आप लोग वहां आइए. आज भी आऊंगा हमेशा की तरह 7 बजे क्रिकेट नेक्स्ट चैनल पर. उनके रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेट नेक्स्ट हैज लर्न्ड दैट द सेमीफाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप कुड बी हेल्ड इन कोलकाता एंड Mumbai, of course, because of Wankhede Stadium, BCCI's home city, and Kolkata. I mean, Eden Gardens is a spectacle, so why not? Why not, दोस्तों? 100 दिन रहते हैं. That's a little over 3 months for the World Cup. और हम इंतजार कर रहे हैं कि 6 मिनट के बाद, hopefully, that press conference at the St. Regis in Lower Parel gets going and we can discuss and see what's happening. Yes, right. हर फाइनल गुजरात शिफ्ट कर देते हैं, जैसे कि लॉर्ड्स हो. बिल्कुल पॉलिटिक्स, कोई बात नहीं, ठीक है. सुबोध, अरे सुबोध आए, मैंने जिक्र किया था सुबोध का अभी थोड़ी देर पहले. क्या रोहित शर्मा T20 बैटर खत्म हो चुके हैं? कब का इसमें कोई नई बात नहीं है. शाहनवाज भाई कह रहे हैं इट्स गोइंग टू बी अ गुड वर्ल्ड कप. आई हैव सीन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स एसोसिएट नेशन लिफ्ट द गेम ऑफ जिम्बाब्वे. बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कब से कह रहा हूं कि भारतीय फैंस, आप लोग जो जुड़े हैं, आप इंडिया की T20 नो शो और टेस्ट नो शो से हौसला मत हारिए. वनडे फॉर्मेट इंडिया के लिए ही बना है. ज्यादा कंपेटिटिव टीम्स नहीं है. घर पे होने वाला है ये वर्ल्ड कप. पाटा विकेट्स होंगे. इंडिया अनबीटेबल एट होम. कोई बात नहीं यार,
सब ठीक है. It's going to be a cracker of a one day World Cup. Will like to like replacement rule apply for World Cup in case of injury during match? No, not a like for like. No, no. You have someone. If a batsman gets injured, you can bring in a bowler. It's not the impact rule. You can't compare Ahmedabad to Lords. Lords is the home of cricket. Are you sure? Right, but try telling that to most hardcore Indian fans. वो बोलेंगे "अरे नहीं यार, Ahmedabad जमाना ही ऐसा है दोस्त." What's your stance of VK5 test centers? VK मैं कुछ समझा नहीं प्रोफेसर साहब. VK5 टेस्ट सेंटर्स. आई डोंट नो व्हाट दैट मीन. सॉरी. वेस्ट इंडीज एक टाइम की वर्ल्ड कप क्रिकेट पर राज करने वाली टीम लिमिटेड हो रहे हैं आज. लग रहा है बिकॉज देखिए यार इनकी स्टैंडर्ड. इट्स नॉट अबाउट स्टैंडर्ड फॉलिंग. पता नहीं इनका फोकस क्या है. डेरन सैमी एक ठीक ठाक प्लेयर थे, कैप्टन अच्छे थे, पर ये ऐसे कमेंट देते हैं कि यार वो खुद कभी मोहम्मद अली द बॉक्सर को कोट करते हैं, कभी और किसी दिग्गज इंसान का नाम लेते हैं. भाई बातें कम, कुछ दिखाओ. कार्ल हुपर वहां से जुड़े हैं, वो कमेंट्स दे रहे हैं टीम से जुड़कर भी. आई जस्ट गेट अ फीलिंग दैट they're just too confused. यू नीड अ लीडर. जेसन होल्डर लीडर नहीं है, शे होप लीडर नहीं है, इनके पास कोई कैप्टन नहीं. निकोलस पूरन तो भैया इतनी रद्दी प्लेयर हैं. they just I think standard फिर भी ठीक है because they did beat England not long ago in a test series. But पता नहीं इनका फोकस, शायद इनका फोकस T20 पे है या lack of leadership. It's very sad to see West Indies, this low. Modi Stadium capacity is higher than Wankhede. Wankhede छोड़ो, Apex, it's the biggest ground in the world. वांगड़े तो दूर की बात है. एमसीजी कम सेकंड. वांगड़े फिर भी छोटा मोटा ग्राउंड है. अगर हम विश्व ग्राउंड्स को देखें वो तो बहुत आगे है भाई. Do you be a big factor again? A weaker team can tend to dominate. I don't think one day में do इतना बड़ा factor है to be honest. But आपकी राय है, कोई बात नहीं. बीसीआई should do something and use techniques. अरे भैया क्रिक में ही नहीं, आप कहाँ से इतनी उम्मीद कर रहे हैं बीसीसीआई से? अरे बीसीसीआई की अगर सोच होती ना इस लाइन की तो इंडिया टॉप की टीम होती तीनों फॉर्मेट्स में. हमारे वेन्यूज टॉप होते. हमारे पूरे देश में दो तीन अच्छे वेन्यूज है. कभी गए हो वेन्यूज पे? अरे कहाँ आप घूम रहे हो क्रिक मीनिया. सीएसटी ब्लू, डू थिंक इंडिया शुड मेक पिचेस लाइक इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड? यार मैं 25 साल से सुन रहा हूँ. अगर ऐसे पिचेस बने थे ना तो कब के बन चुके. डोंट आस्क दीस क्वेश्चंस यार. लेट्स एक्सेप्ट द रियलिटी. इंडिया बहुत बहुत पीछे. पैसों में अच्छा, पैसों में टॉप होगा, सोच इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग बहुत पीछे हैं यार. आज फिर से मुलाकात हो गई. यस देवांग, आज फिर से मुलाकात हो गई. सुबोध सुबोध तो कभी इस बेचारे केएल राहुल को छोड़ते नहीं है. आज मैं नहीं कहूंगा यार शुभ दिन है, वर्ल्ड कप स्केड्यूल आ रहा है, केएल राहुल दूर तक नहीं है टीम के पास. क्यों इस इंसान का नाम ले रहे हो यार आप? सुबोध कम ऑन. विराट कोहली से लॉन्ग टाइम बैक इंडिया शुड हैव 5 टेस्ट ग्राउंड वेयर टेस्ट क्रिकेट शुड बी प्लेड. भाई स्टेटमेंट तो अच्छा है, बहुत दम है विराट कोहली के स्टेटमेंट में, उनके बयान में. बट कहां से आएगा? सोच, आपको सोच बदलनी पड़ेगी. और विराट कोहली 5 साल टेस्ट टीम के कप्तान रहकर भी, नंबर 1 टीम के कप्तान रहकर भी वो सोच नहीं बदल सके बीसीसीआई के, तो कौन ही करेगा? प्रणव is saying, do you think Josh Butter, the ODI finisher, is the right now? Josh Butter, the ODI finish is the right now. I mean, you think he's the best finisher right now? He's got a good record. He bats in the middle order in one days. He's a huge influence. Can someone? Sanju Samson cannot become a Josh Butler for obvious reasons. But yes, if given opportunities, there's no doubt that Sanju Samson can have a big impact. And I still believe he's going to be India's number 1 keeper for the World Cup. Do you agree that dominance and tussle between Jamaica, Trinidad and Tobago, and Barbados? I have no idea about that. I've never heard this, in fact. So, if you know more, please share. I don't know anything. I've never been to the West Indies, so I cannot comment on that. Sorry. जॉस बटलर का बुरा टाइम चल रहा है. T20 ब्लास्ट में भी नहीं नहीं. अभी उन्होंने 90 मारा, एक मैच में 70 मारा. जॉस बटलर का तो फॉर्म, बल्कि मैं परसों ही में देख रहा था जॉस बटलर का फॉर्म. Where did I see Josh Butler? 1 second. परसों वो मेरे फैंटेसी टीम के कैप्टन थे, उन्होंने बस 80 कुछ मार दे भाई. एक सेकंड, मैं आपके लिए इनके स्टैट्स लाता हूं. जॉस बटलर्स रीसेंट, नहीं नहीं, 58, 0, 31, 74. भैया ये कमेंट किसने किया था? आकाश पंचाल. आप तो T20 ब्लास्ट फॉलो नहीं कर रहे. Josh Butler's most recent scores are 83, 74, 31, 0, 58, 23, 11, and 1. If you can get 58, 31, 74, 83 in 4 or 5 innings, I think you're back to
you're back to near your best. So I guess you're not updated of Josh Butler's recent scores. वो डक तो 4 पारी पहले थी भाई. Is New Zealand going to make a place in semi-final since no Williamson? Highly unlikely. क्या रोहित शर्मा? अरे भैया मैं कह चुका हूँ रोहित शर्मा नहीं है, वो अपना आखिरी T20I खेल चुके हैं. ओडीआई में फिर भी ठीक है, because as compared to Test cricket and T20s you can still play without optimum fitness in one days. तो वन डेज में ये खेलेंगे कुछ साल और, T20s में ये खत्म हो चुके हैं और टेस्ट में इनके पास 1.5 साल बाकी है. Your opinion after seeing the ODI squad. I did a whole show on that, so I guess you missed it. Do go back and check out the show where we discussed the squad. It's a good squad. Look, you're not going to see changes in the one-day squad. 3 months from a one-day World Cup, no new players are going to come. जो core आपके players हैं जो पिछले 8-10 महीने से खेल रहे वही खेलेंगे. So I'm not surprised there's no big names in the one-day squad. I think whatever conditions we play in, our players will be under pressure. I know, Dhruv, where you're coming from with your comment, but I seriously think a lot of you are really over analyzing and worrying too much about the one day World Cup. India have consistently made the semifinals of the World Cup, and this is overseas. घर पे यार, घर पे इनको हारना, it's next to impossible. Australia is the only team which in the last 4 years has managed to come to India and win a one day series. It's being played at home. The tracks are going to be largely batting friendly. India have a very set one day squad. I don't think India will be under pressure. They'll be under pressure if they reach the final. But because it's an India World Cup, I would not be surprised if India go on to win the World Cup. There's just not enough competition. T20s are much tougher. Test cricket is much tougher. One day cricket is so easy these days, and you're playing at home. It's the easiest country for India to play in. I'm not worrying about India. I don't think they'll be under pressure. Ashes second match. कुछ ही घंटे बाद मैं अपना Ashes podcast upload करूंगा. England will win this match. Yeah, not by 150 runs like Zach Crawley said, but England आराम से जीतेगी ये match. The sub-regionalism thing in West Indies has always been raised by legends in current. अच्छा, I was not aware of that. Thank you for updating me, Ashutosh. Thank you. शुरू के डक्स देखने के बाद मैंने लैंकाशायर से उनके देखने मैच बंद कर दिए. अरे मैच हम भी कहाँ देखते हैं आकाश, हम तो सिर्फ फैंटेसी टीम में उनको आंख बंद करके अपने कैप्टन बनाते हैं, और 2 मैच में तो उन्होंने बड़े बड़े रन बनाए. गौरव, क्या रोहित विराट का ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है. जेमी सर, क्या विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में प्राइम पास कर चुके हैं? भाई 4 साल से बंदे की एवरेज 28 है. प्राइम तो 4 साल पहले ही वो निकल चुके हैं, फिर भी इनकी एवरेज पुजारा से कम है, फिर भी पुजारा को बाहर कर दिया. इस भाई को रखें टीम में. टेस्ट क्रिकेट में 4 साल तक जब आपकी एवरेज 28 की होती है ना, आपको टीम में होना ही नहीं चाहिए. माफी चाहूंगा. Why Ben Fowkes is not preferred? Because Johnny Bairstow is a more explosive batsman. He's an all-format player. He has much more social media followers. He's more of a bankable player. So I get it. I'm not shocked. Of course, मैं मानता हूँ और मुझे दुख भी होता है कि Ben Fowkes जैसे स्मूथ कीपर को बाहर किया गया, and he's got some good runs as well. But in this day and age, the bigger player, the all-format player is always and he's got a good record, so that's okay. Final prediction. India, Australia, maybe. I think Shubman Gill going to score a century against Pakistan. Well, I've been wanting to say this, and I think I said it in one show. मैं पता नहीं कहाँ था. शुभमन गिल अगर इनका फॉर्म चला ना इस वर्ल्ड कप में, और क्योंकि ओडीआई क्रिकेट का स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है, शुभमन गिल could break Sachin Tendulkar's record for the most runs in a World Cup. याद करिए मेरा स्टेटमेंट. आज क्या है? 27 जून 12:04. I'm saying on record for the second time, Shubman Gill might break Sachin Tendulkar's record for the most runs in a World Cup. Professor saying, I don't know why the Indian team, I just don't have confidence in my team. Totally understandable. They've not won an IC trophy for 10 years, so I get that. Who'll be next batting superstar, Brook or Gill? Gill. Let's go check out the World Cup squad. Let's see what's happening. I've got that page open. The dignitaries are getting onto the stage. The announcement will be announced shortly. Muthaiya Muralidharan hai, ICC CEO Jeff Allardyce, और of course BCI सेक्रेटरी जय शाह है. वीरेंद्र सहवाग भी थोड़े लेट है, मैं सुन रहा हूँ, वो अभी जुड़ेंगे कुछ ही मिनट के बाद. देखिए ये इंडिया है, 11:30 का टाइम दिया था, तो मुझे मालूम था कि 12 12:15 से पहले कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आप लोग को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा मैं 11:15 आप लोग से जुड़ूंगा. आशुतोष तो वेस्ट इंडीज का पीछा ही नहीं छोड़ रहे. लगता है आप वेस्ट इंडीज के बहुत बड़े फैन हो. The folks in Caribbean Cricket Podcast said that West Indies was a colonial identity
and their new guys don't feel the motivation or pressure to live up to that identity. Again, I don't follow West Indies cricket that closely. I never been there, तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है. So what you're saying, I guess it's true. But again, I'm the wrong person to ask about what's happening in the domestic West Indies cricket. Really sorry यार. जय भाई, कौन सी टीम सरप्राइज कर सकती है इस वर्ल्ड कप में? Ah, I would want to say, look, पाकिस्तान की टीम को तो मैं ज्यादा रेट नहीं करता हूँ. श्रीलंका सरप्राइज यार, पता नहीं वनडे में ज्यादा कोई सरप्राइज लाइक टीम नहीं. ये छोटी मोटी टीम जो 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 मानता हूँ अच्छे कर रहे हैं क्वालिफायर्स में, ये बड़े स्टैंड, ये बड़े ट्रॉफी, ये बड़े स्केड्यूल पे आकर, बड़े प्लेटफॉर्म पे आकर ये थोड़े फंस जाते हैं. तो आई एम नॉट रियली श्योर. हो गया रिलीज स्केड्यूल, बताइए भाई, स्केड्यूल रिलीज हो गया है. लेट्स ड्रॉप द डिस्कशन नाउ and let's get into the schedule. Let's see what the schedule is. Let's open up the ICC website and let's check out if the schedule has indeed been announced. What is the schedule now? Let's look at the schedule. Yes, दोस्तों, चलिए आपके साथ ब्रेक. Thank you, my friend, for bringing up that. किसने बताया मुझे कि ये शुरू हो गया है? It was Apex. Chaliye. Thank you guys. Let's stop the discussion now. Let me read out the news to you. Breaking news. The schedule, I'm reading from the ICC release. The schedule for the Women's World Cup has been released and the 10 venues for the mega event that will span 46 days later this year. जैसे कि हमें सब मालूम था, वर्ल्ड कप अक्टूबर 5 को शुरू होगा. इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, यानी कि पिछले 2019 वर्ल्ड कप के विजेता और रनर्स अप न्यूजीलैंड और इंग्लैंड खेलेंगे कहां पे? हाँ, सरप्राइज सरप्राइज, नो सरप्राइज, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद. तो ये है ओपनिंग मैच, अक्टूबर 5th 2023, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम. इंडिया का पहला मैच होगा अक्टूबर 8 को, 3 दिन बाद, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन चेन्नई. वी ऑलरेडी न्यू दैट. 10 टीम खेलेंगे ये शोकेस इवेंट. 8 ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, बाकी के 2 टीम क्वालिफायर के बाद से आएंगे, जो कि जुलाई 9 में जिम्बाब्वे में होगा. Each team दोस्तों plays the other in a round robin format with the top 4 qualifying for the schedule. Let's now go to the schedule. Australia take on South Africa on October 13th in Lucknow. उसके बाद इंडिया पाकिस्तान, हम सब जानते हैं संडे का दिन है, तो ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान होगा, अहमदाबाद में ये होगा. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे 20 अक्टूबर को बेंगलुरु में. इंग्लैंड खेलेगी साउथ अफ्रीका से अगले दिन अक्टूबर 21 मुंबई में. इंडिया फिर खेलेगी न्यूजीलैंड के साथ 22 अक्टूबर को धर्मशाला में. और एशेज की टीम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, माफी चाहूंगा, खेलेंगे नवंबर 4 को अहमदाबाद में. अक्टूबर 29 को इंडिया मिलेगी इंग्लैंड से लखनऊ में दोस्तों. और आखिरी ग्रुप स्टेज होगा इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच कोलकाता में नवंबर 12. अब आते हैं दोस्तों जल्दी से नॉकआउट स्टेजेस पे. पहला सेमीफाइनल होगा वेडनेसडे नवंबर 15 वानखेड़े स्टेडियम, और अगले दिन नवंबर 16 सेकंड सेमीफाइनल कोलकाता. दोनों सेमीफाइनल्स का एक रिजर्व डे है अगर जो बारिश ने काम बिगाड़ा. और ऑफ कोर्स फाइनल अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम नवंबर 19. अब हम देखते हैं 10 वेन्यूज, हैदराबाद, अहमदाबाद, धर्मशाला, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता. लेट्स नाउ ओपन अप द स्केड्यूल. और मैं आपके सामने मैं वन बाय वन, वैसे स्केड्यूल का लिंक मैं यहाँ पे इसी लिंक पे मैं डालता हूं ताकि आप लोग, नहीं, मैं आप लोग के लिए यहां डालता हूं स्केड्यूल. एक सेकंड फॉर ऑल यू लवली व्यूअर जो मेरे साथ बड़े हैं यहाँ पे, जुड़े हैं यहाँ पे. ये रहा वर्ल्ड कप स्केड्यूल. आप इस स्केड्यूल को देखिए, लिंक खुला है. जी हाँ, लिंक खुल चुका है. आप भी लिंक डाउनलोड करिए. लेट मी नाउ गो वन बाय वन, एंड बिकॉज आप में से बहुत व्यूअर्स चाहते हैं कि जल्दी से मैं बता दूं, Thursday, October 5th, it's England, New Zealand at the Wankhede Stadium. The next day, October 6th at Hyderabad, Pakistan versus Qualifier 1. Saturday, October 7th, Bangladesh versus Afghanistan, Dharamshala. South Africa versus Qualifier 2, also on October 7th, will be at the Arun Jaitley Stadium in Delhi. अगला दिन संडे अक्टूबर 8 दोस्तों 2 बजे दोपहर को चेन्नई में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. अगला दिन अक्टूबर 9 हैदराबाद में न्यूजीलैंड वर्सेस क्वालिफायर 1. मार्क दीज डाउन दोस्तों, मैं वन बाय वन करके आपको पूरा वर्ल्ड कप स्केड्यूल यहां पे आज बताऊंगा. अक्टूबर 10th धर्मशाला इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश. अक्टूबर 11th दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम कोटला
India बनाम Afghanistan. Thursday, October 12th, Pakistan versus qualifier 2 in Hyderabad. Friday the 13th, खतरनाक दिन, at the Lucknow Stadium, Australia versus South Africa. Saturday, October 14th, Chidambaram Stadium, MA Chidambaram, Chennai, New Zealand बनाम बांग्लादेश. उसी दिन शाम का मैच 2 बजे, दोस्तों मैच होते हैं 10:30 बजे सुबह और 2 बजे दोपहर को. तो अक्टूबर 14 को सुबह 10:30 बजे न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश चेन्नई. उसी दिन दिल्ली में 2 बजे इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान. दैट्स अ क्रैकर ऑफ अ मैच लाइंड अप. और फिर टॉकिंग अबाउट द मदर ऑफ ऑल मैचअप्स, संडे अक्टूबर 15 2 बजे अहमदाबाद, India versus Pakistan. Moving on quickly, Monday, October 16th, Australia versus qualifier 2 in Lucknow. October 17th, South Africa versus qualifier 1, Dharamshala. Wednesday, October 18th, New Zealand versus Afghanistan, Chennai. Thursday, October 19th, Pune, Gahunje outside Pune on the expressway. It's India versus Bangladesh. अगला दिन 20 अक्टूबर Friday, Australia versus Pakistan, Bengaluru. Saturday, the first match on Saturday, October 21st, 10:30 in Lucknow, qualifier 1 versus qualifier 2. Second match of the day, October 21st, 2 p.m., England versus South Africa at the Wankhede. Sunday, October 22nd. अगर संडे का दिन है तो इंडिया जरूर खेलेगी 2 बजे दोपहर को, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इन धर्मशाला. अगला दिन 23rd October, Pakistan versus Afghanistan. Tuesday, October 24th, Mumbai, South Africa versus Bangladesh. October 25th, Wednesday, Australia versus qualifier 1 at the Arun Jaitley Stadium in Delhi. Agla din, October 26th, England versus qualifier 2 in Bengaluru. October 27th, Chennai, Pakistan versus South Africa. October 28th, हिमाचल प्रदेश स्टेडियम धर्मशाला, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड. उसी दिन दोपहर का मैच, क्वालिफायर 1 वर्सेस बांग्लादेश एट ईडन गार्डन्स कोलकाता. अगर संडे का दिन है तो कौन खेल रहा है दोस्तों? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड. दैट्स अ क्रैकर ऑफ अ मैच अगेन, लखनऊ के स्टेडियम पर. मंडे अक्टूबर 30th, पुणे, अफगानिस्तान वर्सेस क्वालिफायर 2. October 31st, Eden Gardens, 2 p.m., Pakistan versus Bangladesh. Now we come into November. November 1st, New Zealand versus South Africa, Pune. November 2nd, India versus qualifier 2, Wankhede Stadium. November 3rd, qualifier 1 versus Afghanistan. It is going to be Lucknow. Saturday, November 4th, the morning match, सुबह 10:30 New Zealand versus Pakistan, Bengaluru. Second match of November 4th, England versus Australia, अहमदाबाद. संडे का दिन यानी कि इंडिया फिर से ईडन गार्डन्स कोलकाता, दोपहर 2 बजे. उस दिन कोई मॉर्निंग मैच नहीं है क्योंकि it's India versus South Africa. Moving on quickly, Monday, November 6th, 2 p.m., Arun Jaitley Stadium, Delhi, Bangladesh versus qualifier 2. November 7th, Australia versus Afghanistan at the Wankhede Stadium. Wednesday, November 8th, England versus qualifier 1 in Pune. The next day, November 9th, New Zealand versus qualifier 2, Bengaluru. Friday, November 10th, South Africa versus Afghanistan, Ahmedabad. Saturday, November 11th, no morning match, just the one match, 2 p.m., coming to you from Bengaluru. It's India versus qualifier 1. Sunday, November 12th, the last day of the league stage. दोस्तों, ये दिवाली का दिन है. नॉर्थ में 12 तारीख को दिवाली होगा और दिवाली के दिन यानी कि November 12th, सुबह 10:30 पुणे से ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश, और फिर 2 ईडन गार्डन्स कोलकाता से इंग्लैंड वर्सेस Pakistan. There I have just reeled off the list of the fixtures. Semi-final 1, November 15th. Semi-final 2, November 16th. Or final will be on Sunday, November 19th. Let's see what your take. Oh, भाई बहुत comments आए थे. Please reply me. बुमराह खेलेंगे नहीं? जय भाई डायरेक्ट स्क्रीन पे लाओ यार. ये फोन से कर रहा हूं मैं. ये अगर मैं स्ट्रीम यार्ड से करता तो मैं लाता, लेकिन ये फोन से कर रहा हूं तो मैं ला नहीं पाऊंगा दोस्त इसको. सर खाना हो गया आपका? अबे यार क्रिकेट की बातें कर रहे हैं तुम, खाने के बारे में पूछ रहे हो. सुबोध, नॉटी बॉय, ओपन टू collab, not me. Yes, I'm open to anyone who wants to collab. Absolutely. यार तुम प्लेयर को घटिया मत बोलो यार. अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, न्यू राइवलरी बनी जा रही है. हाँ, इनके फैंस बड़े तगड़े हैं दोनों के. स्पीकर्स कौन से बैकग्राउंड में, ये मैंने कल के शो में बताया. देयर कॉल एडिफायर. टिकट कहां से बुक करें? टिकट्स आईसीसी की वेबसाइट पे आने वाले हैं कुछ ही पल में.
I'm looking at the page. They're going to upload the tickets very, very soon. Once again, for all of you, I'm going to paste that link here so you can see it. You can go to the ICC वेबसाइट बीसीसीआई के वेबसाइट पे मत जाइए कभी मत जाना वहां से कुछ नहीं मिलेगा हो सके पेटीएम या बुक माई शो मोस्ट लाइकली पेटीएम से जुड़े होंगे ये लोग ऑफिशियल पार्टनर बट definitely keep going back to the ICC website निहार पूछ रहे when will India squad announce 1 month before so in the middle of September first week second week is when the squad will be announced अभी तो बहुत टाइम है यार एशिया कप के टाइम पे स्क्वाड वो अनाउंस होगा lots of time. Thank you, Vinod Kaka. Well, thank you for joining and always watching me and always being a very, very good supporter of this channel. शुक्रिया विनोद काका. तो दोस्तों आप लोग को कैसा लग रहा है चलिए मैं फिल्टर लगाता हूं इंडिया का इस स्केड्यूल पर लेट्स गो एंड पुट इंडिया एज द फिल्टर अब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया के मैचेस पर आपको शायद याद नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत तेजी से आपको सारे वेन्यूज बताए थे अब मैं सिर्फ बात करूंगा इंडिया के मैचेस को लेकर अक्टूबर 8 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2 PM इट्स अ संडे इन चेन्नई 3 दिन बाद वेंसडे अक्टूबर 11 को इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान इन दिल्ली उसके 4 दिन बाद 15 तारीख को आप सब जानते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद थर्सडे अक्टूबर 19 इंडिया वर्सेस बांग्लादेश इन पुणे गहुंजे ऑन द एक्सप्रेसवे आउटसाइड ऑफ पुणे 3 दिन बाद 22 अक्टूबर को संडे का दिन इंडिया बनाम न्यूजीलैंड धर्मशाला में a match I'm looking forward to because of the altitude and New Zealand's Pacers Trent Bolt will be playing और इंडिया का आखिरी मैच अक्टूबर के महीने में है 29 तारीख इंडिया वर्सेस इंग्लैंड लखनऊ अब आते हैं नवंबर 2 को इंडिया वर्सेस क्वालिफायर 1 वानखेड़े स्टेडियम 3 दिन बाद यानी कि 5 नवंबर को संडे के दिन नो सरप्राइजेस इट्स इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका at 2 p.m. and Saturday 11th November India versus qualifier 1 these are India's matches let's take some comments BCI ने पाकिस्तान को difficult pitches पे मैच दिए yes so both one day we'll meet and we'll discuss a lot about KL Rahul सर आपका preferred opening pair कौन होगा गिल एंड रोहित शर्मा गौरव कह रहे why don't we see you on any Jio Star network मुझे करना ही नहीं है कितनी बार कह चुका हूं मुझे ऑफर भी आया स्टार से मुझे करना नहीं है भाई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मैं बहुत खुश हूं यार अपनी लाइफ से एक्टिंग करता हूं एंकरिंग करता हूं पॉडकास्ट होस्ट करता हूं मुझे कभी इंटरेस्ट था ही नहीं यार टीवी के सामने आने का पर थैंक यू फॉर योर सपोर्ट सर इंडिया का कोई चांस नहीं है मैं तो एज न्यूट्रल फैन देखूंगा करो भाई मैं तो कह रहा हूं इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी फिर आप लोग करेंगे यार जिमी भाई ने बताया था यार 4 महीने पहले वनडे क्रिकेट भाई सुबोध इतना लो स्टैंडर्ड है वनडे का पाटा विकेट्स हैं इंडिया घर पे खेल रही है फाइनल तक तो ये टीम पहुंच जाएगी अगर जो ये नहीं पहुंची फाइनल तक तो ये कलंक है इस इंडियन टीम पर क्वालिफाई मोस्ट लाइकली श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे इट लुक्स लाइक वेस्ट इंडीज आर रियली स्ट्रगलिंग वेस्ट इंडीज आर रियली स्ट्रगलिंग नहीं where can we buy tickets I'm just checking the ICC हाँ ICC वेबसाइट is saying ICC is saying अभी एक प्रेस रिलीज आया ICC से टिकट्स आपको 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 मिल जाएंगे एक उस प्रेस रिलीज के नीचे कुछ पॉइंटर्स हैं मैं आपको पढ़ाता हूं आईसीसी प्रेस रिलीज पर इफ वेस्ट इंडीज क्वालिफाई दे विल बी क्वालिफायर 1 irrespective of where they finish in the qualifiers second point if Sri Lanka qualify they will be qualifier 2 irrespective of where they finish in the qualifiers अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स तक पहुंचती है तो वो कोलकाता में खेलेगी अगर इंडिया क्वालिफाई करती है सेमीफाइनल्स के लिए जो कि वो जरूर करेगी दे विल प्ले इन मुंबई अनलेस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल हुआ तब वो कोलकाता में खेलेगी यानी कि पाकिस्तान टीम मुंबई नहीं जाएगी फॉर ऑब्वियस रीजंस एनीवेज दोस्तों लेट्स रैप दिस अप लेट मी टेक अ कपल मोर क्वेश्चंस बिफोर आई गो थैंक यू फॉर जॉइनिंग फाइनल में कौन पहुंचेगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया कलंक जी हाँ जिमी सर वेयर आर यू फ्रॉम भाई लोग जो जुड़े हैं मेरे रेगुलर व्यूअर्स पहले जरा इस गेम वन गेमर्स को बताइए कि मेरा नाम क्या है इस बेचारे ने मुझे जिमी कहा और दूसरा मैं कहां से हूं आप लोग प्लीज यहाँ पे इनको बताइए मैं तो बोल बोल के पक चुका हूं जी भाई लखनऊ की पिच ने अभी तक सबको सरप्राइज दिया आपको नहीं दिया है लेकिन T20 में ना यहाँ हम वनडे के बारे में बात कर रहे हैं बहुत 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 डिफरेंस शिवम दबे कह रहे हैं नाइस यस इट्स ऑल वेरी नाइस सुबोध कह रहे हैं जेसन होल्डर ने शायद वर्ल्ड कप के टिकट के साथ आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट खो दिया हाँ भाई कितना sad to see a guy like Jason Holder bowling such tripe these days. जी भाई इस बार किस टीम के बैट्समैन का डबल 100 आ रहा है वर्ल्ड कप में इंडिया का इंग्लैंड का
आई डोंट थिंक बाबर आजम ओपनिंग करेंगे, नहीं तो उनका जरूर आता। इंडिया इंग्लैंड का हो सकता है, सबसे बेस्ट चांसेस इनके हैं। Would love to see you on OTT TV. It could be opening larger scale things. It could be, but again, like I said, I'm not dying to do it. I've got some offers. It didn't work out. One was about money. Second, they wanted me to move to Bombay. Having grown up in Bombay, I know what Bombay was. I know what Bombay is now. Mumbai is. I just it's not a priority. I'm very happy doing what I do. The freedom. जब से मैंने 2019 के अंत में जब मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ा, उसके बाद मैं इतना क्रिएटिव हूँ, इतना मैं खुश हूँ। मुझे किसी को सलाम नहीं ठोकना है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मेरा कोई बॉस नहीं है। मेरे मतलब भगवान ने मतलब भगवान का हाथ है मेरे ऊपर। व्हाटएवर भगवान यू बिलीव, आई बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट डिस्पाइट द लॉकडाउन व्हेन मेनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, आई गॉट एक्टिंग ऑफर्स। तो माय पॉइंट इज, इफ आई जॉइन दीज फुल टाइम पीपल, मैं आधी चीजें नहीं कर पाऊंगा जो मैं कर रहा हूँ, जैसे कि यूट्यूब, एंकरिंग, podcasting, acting. I've done 5 movies. I've done 5 web series. ये सब पॉसिबल नहीं होता अगर मैं जियो स्टार ये सब करता। तो भाई इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं है, मुझे कभी इस चीज में इंटरेस्ट था नहीं। मैं 17 साल से जर्नलिस्ट हूँ। ऑफ दोस 17 years, about 14 were spent writing. The last few have been in front of the camera. But honestly, मैं दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, मुझे कभी इंटरेस्ट था ही नहीं ये टीवी पे जाकर एंकरिंग वैंकरिंग करने का। ओके, जब अलजारी ने लास्ट ओवर में 8 रन डिफेंड किया तो होल्डर को दिया क्यों? मैंने कल ट्वीट भी किया था, दिस इज वेरी वेरी सस्पिशियस। आई डोंट नो। Is contributing to Cricinfo articles a full-time job? I wouldn't know because when I was at Cricinfo from 2005 to 2010, I was a staff writer. मतलब I was a full-time employee there. So I don't think anyone who can just contribute articles for Cricinfo because they don't pay very well, I don't think that can be a full-time job. So और वैसे आजकल लिखता कौन है? आजकल किसी को लिखने में इंटरेस्ट नहीं है। Very very few people call me for articles. It's more for videos. I do write. I write for GQ. I write for Daffer News every other week. But I don't think if anyone is earning money just by writing for Cricinfo right now, I don't think they're in the right line of work. That's my honest thing. Because आजकल आप सिर्फ फ्रीलांस होकर आर्टिकल लिखकर आप अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकते। And I'm speaking as a freelancer. It's all about videos now. What do you think of Dharamshala as venue against New Zealand? Advantage New Zealand, totally. Warner retiring from ODIs as well. He has announced retirement after Ashes. Warner has said कि अगर मैं न्यू ईयर्स टेस्ट मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर जनवरी के पहले हफ्ते में, अगर मैं वहां उस टाइम तक माफी चाहूंगा, अगर मैं उस टाइम तक स्टेज टीम में रहूंगा, तो I would want to bow out from there and then I'll look at ODIs. But I don't know. I mean, right now David Warner is not scoring runs, so I don't know. Sir, you will come at stadium for India versus Pakistan match. देखते हैं, if I can get the media pass, मैं जरूर आऊंगा वहां पे। But I'm looking more at I'm looking at क्योंकि मैं रहता हूँ ना नॉर्थ में, so I'm looking at Delhi, I'm looking at Lucknow, and I'm looking at Dharamshala as my 3 venues. I'll go to Bombay, but I'm not going to go to many venues. तो अहमदाबाद शायद मैं उस मैच के लिए आ जाऊंगा, but बाकी मैं I'm going to target Delhi, I'm going to target Lucknow, I'm going to target Dharamshala. It's much more easier. I live in Delhi, it's taken care of. Lucknow ज्यादा दूर नहीं है आजकल, यहाँ से 4 घंटे हैं। और धर्मशाला I'll also be going. आप और कोई स्पोर्ट फॉलो करते हो लाइक F1 फुटबॉल? आई डोंट कंसिडर F1 a sport, Shivam, sorry. And football I watch now and then. Apart from that, I like hockey and I like badminton. These are the 2 sports that I follow a bit more. I like American sports, not their वो football वाला, इनका वो NFL. I do like basketball and I like baseball. जी भाई, जिमी एंडरसन लॉर्ड्स में चलेगा क्या? भाई आकाश, पिच देखा आज? ग्रीन 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 ग्रीन। Do you think Bumrah has future in long run and all formats? I don't think Bumrah is going to play too many test matches. I think he'll have to be managed in T20s and one days. But yeah, I don't think. What happened to Mohali Stadium? I know, man. One of the earliest memories I have of watching a test match, well, not the earliest, but one of the ones when I was in school was India Sri Lanka at Mohali. Good place. Anyways, भाइयों बहनों, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। It's 12:30. I have to go and भाई से बारिश पड़ रही है, अभी जा नहीं पाऊंगा मैं। Anyways, thank you all for joining the stream. I will come back again every day. I'll bring you some kind of live stream. फिलहाल आज के चलता हूँ। Enjoy your day. Have a great day. See you all tomorrow. Take care. जय हिंद।